शार्क्स, कैसा लगा आपको देख के? Very good. Very good. मजा आ गया. 3, 2, 1. इनसाइड एफपीवी इंडिया की पहली कंज्यूमर बेस्ड लीडिंग ड्रोन कंपनी है जो कि प्लग एंड फ्लाई एफपीवी ड्रोन्स बनाती है. मतलब आप बैटरी को प्लग इन कीजिए ड्रोन में और फ्लाई कीजिए और बाकी का सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम देख लेंगे. ये इंडिया की फर्स्ट एफपीवी वुमेन पायलट भी है. Why did you think of VC's investment and not bootstrap it yourself and then grow? Because these are two ways of growing, right? But you chose the VC way. So what was your thinking back then and क्यों चुना ये path? And then you can get back to it. Okay, got it. So जब पैसे नहीं होते ना तो VC and wherein obviously your parents at that particular point जहाँ पे कुछ नहीं होता है aren't supportive. So that is like in my case. Okay, welcome to this episode of the Openers podcast. Today we have with us Deyvant Bhardwaj from InsideFPV. You must have heard InsideFPV in one of the episodes of SharkTank season 2 recently. And Deyvant is also a VIT Vellore graduate from 2022 batch. And let's get to know about his journey of building InsideFPV and how he came across this idea. So Deyvant, I think सबसे पहले let's start with your introduction and your background first of all, where you come from and what are you doing right now. Okay, so I'm currently 22 years old and I graduated from VIT University as Nishan mentioned last year from electrical and electronics branch. And I'm from Mumbai and I'm currently doing a startup wherein we have complete ocean in which I'm also in one of them. So yeah. That's really great, Devant. So, यार college के बाद, right? Or even after, I would say कि you guys started even during college, right? So how you manage your studies and how did this idea arises, right, in your mind to land into the drone space? Okay, so like it was completely different right from the start. Even if you see the difficulties, जो शुरू में जो difficulties होती है with managing studies and managing something which you haven't even thought of. तो एक level पे वो जो है understanding एक level पे पूरी छूट जाती है. But when it comes to starting a startup right from scratch, so it is like one of those stories wherein you are like about to reject any particular workshop and that particular topic makes you like earn something which you had never even thought of. So it was like one of the workshop named quadcopter workshop wherein one of my friend dragged me in because he wanted some like company to just chill out and have fun learnings. So, this was in first year? Yeah, right. फर्स्ट ईयर क्वाडकॉप्टर वर्कशॉप रहता था तो वो ग्रेविटास के टाइम वन ऑफ द टेक इवेंट्स तो आई वाज लाइक obviously interested in technology and also had dabbled in robotics in my high school even. So but I wasn't sure कि यार how to turn those interests into a real time or full time career. So it really felt fascinating that I couldn't even control myself. यार जैसे ही मैंने देखा वो drones ना, I just saw the like potential to completely industry को change कर देने वाला in consumer sector mostly because wherein foreign countries के जो drones थे, ठीक है, तो उसने अपना footmark रखा था. So I wanted to change in that perspective कि नहीं यार मैं एक दिन बना के रहूँ. So that was my whole scenario which I got off to start. Like pretty interesting, yeah. मतलब वही है यार कि मतलब
कोई वर्कशॉप या फिर कोई एक इवेंट राइट विच हैज हैपेंड इन ट्रिगर कॉलेज होता है एक। कहाँ से कहाँ ले जाता है, हाँ ट्रिगर हो जाता है, बट या इन द बैक ऑफ Right, माइंड वी मस्ट बी हैविंग इट कि यार कुछ करना है इस एरिया में एंड लेट्स right, ट्राई इट आउट. So how you right. met your co-founders? So basically, so after that particular incident happened, so I just entered one of the drone teams in VIT and had started even attending workshops. तो वहाँ पे और workshops होते थे और जो same vision वाले लोग हैं, like people with the common vision, we used to like network in and around. Obviously, that time networking wasn't at scope, but still जिससे हम लोग मिल पाते थे with the same vision and outlet. So there I met Earth, like who was in my rival team, and later on Oshi came and as vice captain a year after. So I was the captain of Rotor FP, and which is a drone team in VIT as of now. And even at that time we used to कि यार हम लोग अपने अपने individual customers जो थे हम लोग उसको serve करते थे. And even Earth and Oshi used to do the same. So when we had talked about or जब हम लोग ने बातें करना चालू किया, then it got a great pair of bonding. When it comes to bonding वाले part, तो हम लोग ने धीरे धीरे build किया. When we used to go in events वगैरह में, तो धीरे धीरे हम लोग ने जैसे bonding build की, and then we got to know कि यार जब हम लोग same common consumer base को strengthen कर रहे हैं, so why not keep multiplying it at next level? So obviously then we faced problems in COVID and then it got started. So ऐसे हम लोग I think I'd like you to touch upon the individual business part a bit more, because this is also not normal. I mean, college में रह के कौन individual business चालू करता है यार? मतलब क्या Exactly, क्या मतलब business है, मेरे कैसे को किया ये तूने, नहीं क्या किया तूने, ठीक है? So you mentioned that all three co-founders started their own individual thing, and you realized कि यार same चीज कर रहे साथ में करते हैं, and So you even got I was shocked fascinated. कि how Yeah. they are serving customers while being in that new area, right? मतलब how did you started, right? And Yeah, and so just to basically add on, Deyvant, तो फर्स्ट ईयर में तुझे क्वार्टर्स के बारे में पता चला, उसके बाद you might have explored it a bit more and gotten to know about it कि right. तो what is the वो industry जो and all. tenure Yeah. था, जो Hmm. tenure था, when you see the tenure in my drone career when I had joined the team. So in that particular aspect, when you see कि यार मैंने like 5 साल हो गया यार experience किए हुए, so it is at ये level पे जहाँ पे मैंने projects different projects तो थे उस time पे वो काफी explore किया. So I had like even gotten projects from ONGC and Bangalore airport जहाँ पे on ground जाके फिर हम लोग ने वो complete किया. And So how even do you फिर manage to get these projects as well as like funding, right? So basically start with right to make the first production level drone. How did you guys got into that uh, so venture? at that particular time we had a Hmm. third party system wherein third party were the faculties obviously. Uh, So हम लोग third party ज़्यादा prefer करते थे because we had to follow the rules. So accordingly one of the faculties who were at a level of like meeting DRDO people at that scale he was into. So accordingly he mentioned कि यार ये team है एक VIT में and they do tremendous job in building drones right from scratch, and then accordingly फिर वो tech develop करके फिर वो faculties उसको आगे बढ़ाते. So faculties had played major role in getting us networks and getting us projects mostly. तो इसके लिए मैं credit देता हूँ. यार So ये नहीं, that काफी was बढ़िया my था, completely makes काफी. sense. But हाँ, Yeah. reaching out to those faculties and like then linking all of that networking gets right. started, Yeah. right? Yeah, Tapping into the it's good. network. But Yeah. you would be making, say initially, even if when you started making drones, or even in your team, Rotor FPV, when you guys are making drones, एक या दो तीन मतलब उसके लिए भी cost होता है, because I've seen even in my team when I was in team Curtis or in VIT, when we started making drones, we realized that the good, very lightweight material that we required is in thousands of rupees at that time, and we had to get that budget and make those drones.
So Right. what was your approach? Was it like ठीक है एक ड्रोन बनाते हैं एंड बेचते हैं, फिर पैसे आएंगे उस पे एक और ड्रोन बनाएंगे? Or Right. because these customers that you're naming, these are big companies which might, I'm not sure, did they only need one drone, or did they need more focus on the person who is piloting the drone? Got it, got it. So mostly it was all about customized. So what we were doing is कि customer input देता था, ठीक है? So basically coding में भी same चीज होती है. There's a problem statement given और वहाँ पे हर एक problem statement पे हर एक step पे like inputs देने होते हैं, ठीक है? जो भी हम लोग को चाहिए, जो भी customers के requirement है, and accordingly you provide solutions, right? So एक एक stage पे according to that particular thing, we provided the solution and we provided customized solution, जो कि काफी minute level चीज पे हम लोग workout करते थे, so that customer, obviously, if customer gets his own customized drone, तो काफी एक उस टाइम पे काफी बोला जाता था कि it was nice to see one of those persons when in customized चीज करके और produce करते थे, but whenever it comes to जो monetization वाला part है, it is completely back end part. तो हम लोग क्या करते थे basically, I used to take advance payment directly rather than having any further backlog वाली चीज जो कि थोड़े थोड़े amount करके release करते थे. ऐसा नहीं होता था, पूरा one go में आता था amount, and वो amount आने के बाद ही हम लोग process करते थे जो भी components या subsystems लाने हैं drone से. So that was like one of those things जहाँ पे आप पैसे भी डाल रहे हो but आप उससे margin भी अपना बना रहे हो. So that margin again we used to invest in different drone. तो वो margin बनाते 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 it got segregated. तो धीरे धीरे वही margin पकड़ के वही दूसरे drone में डालना and again like expanding its own thing. तो वहाँ पे ये scenario develop हुआ. So how difficult it was, like, I know, right, you are interested, your founders are interested, but how did you manage to create a team out of it, right? And that too, staying in a college. Because each of you might It have your might be own very difficult. specialty or some expertise Very wherein true. you contribute. So, right. So Arit का काफी expertise था in marketing or sales में. So he used to bring in customers, and Oshi was more sort of कि international procurements होते थे और domestic होते थे, logistics होता. So basically she used to manage it out और मेरे side से पूरा tech संभल जाता था. So we had our own pathways, but again Try. so yes, scenario. Basically, you had complementary skills, and that's how you made the team. But did you have that in mind when you all three came together? Because वो नहीं होगा, right? तुमने नहीं, पकड़ शुरू लिया में एक शुरू में नहीं ऐसा. होता, हाँ, right? शुरू में नहीं हो रहा था, but obviously we have to channelize it correct. some of the other day, right? So हाँ, तो अभी And भी over the time also you figured it out, right? Who is better at what, and delegating that piece. Yeah. very true, very true. Interesting. But how did you recruit in college, right? You might be needing a team, right, who will be like working day in, day out to support these production level drones for such big companies. So how Yeah, did you like go about how that? big And is Inside FPV now? How many permanent? How many temporary people? So as of now, Inside FPV has around 45 members, in which we have 10 of full time, and obviously 35 as interns. But over there, I would like to mention that all the interns currently who is working at Inside FPV is on stipend. तो हम लोग stipend के बिना काम नहीं करवाते. that is one of the things or one of the goals which we have set. जब तक यहाँ रहेंगे तब तक stipend मिलेगा. But over here there is one catch जहाँ पे you need to be at least 8 level up so that we don't have to instruct you much and directly आप अपना skills put in करोगे and result will be on your table. So that is how we have inculcated in our interns as well as in full time. So दोनों वहाँ से sort हो जाता है.
I think it makes sense also, right? In such a early stage company, having the really good people working under you, so you don't have to like tackle onto like everyday challenge, right? The technical challenges, or whether it could be sales or Right. anything, right? Those things could be sorted for you, and then you can focus on like a bigger Right. piece of work. But I think one question here, Devant, is Abhi to you're operating out of Vellore because you're getting the space and resources from there. Right. And most of your team might also be comprised of students who are part of the college. Right. Uh, who going ahead might have their own jobs. They might Right. not prefer staying in the city. There's no city as such within Vellore. So how do you plan on expanding your team going forward? Because this is not also a hybrid job जहाँ पे laptop पे काम हो जाएगा. People need to be there if they are taking care of the assembly or taking care of the even testing of the drones, right? So have you thought that through? So that is obviously a long way ahead. But still, even if I say 6 months would be a time frame which I could take it from here to where our company is registered, which is Surat. So talking about जो resources हैं, rightly mentioned by you, but obviously we are working on that. क्योंकि वो एस्पेक्ट भी एक अलग पाथवे और अलग रोड मैप क्रिएट करेगा which we haven't figured it out yet because हम लोग ने ये चीज सोची ही नहीं है regarding what to lay out or what to lay our own paths, but definitely we'll be going ahead with that क्योंकि that is much more important when it comes to the complete production and complete जो भी assembly line हम लोग setup करेंगे. So yeah, we'll be obviously looking forward in that. Yeah, I think it must be in the back of your mind, but like ठीक है अभी Yeah. priorities अलग है उसमें focus करते हैं वो Right. बाद में आएगा Right. देखेंगे. There are like so many things ongoing. एक तो बहुत मुश्किल से कुछ कुछ चीजें हो रही है wherein we need to obviously deliver और daily ऐसा नहीं है कि हफ्ते में हो जाएगा या monthly हो जाएगा. Deliver daily करना हो जाता है तो that's one of those things. Like, But I think as stressful or hectic as it is, fun भी होगा तुम्हारे लिए because this is something that interests you, obviously, right? So good going forward. So I think we went through how you started and then co-founders साथ में आए and then you might have gotten your first clients through your professors and then धीरे धीरे बढ़ता गया. धीरे धीरे बढ़ता गया, so धीरे धीरे production को भी बढ़ाना होगा and you couldn't just work with your own hands assembling everything. You might have to find assembly lines, set up the supply chain for the entire manufacturing to selling the. So Right. how did you take that approach and when did that start and how is it going right now when you talk about the production, the supply chain and the selling marketing? So we have started off with our manufacturing aspect when it comes to battery motors, and because we are mostly into contract manufacturing where we acquire one of those companies for a year or so on the contract basis, and accordingly we set up assembly lines. So right now we have one of those companies in Bangalore um, doing hardware setup, and one of the company is in Hyderabad. So these two are currently working in the whole manufacturing part, but when it comes to and manufacturing from scratch. So but when it comes to like obviously inside FPV builds and sells drones for consumers, agriculture, and are innovating drones for defense, obviously at every altitude. So for these segments we have channelized each and every team for it, so in which we currently have around 25 members in tech team, जहाँ पे 10 जो है वो पूरे embedded है, in which सब लोग segregated है in agriculture, consumer and defense. So there's no like a common ground जहाँ पे they can mix up or something. तो एक वो है scenario, but supply chain as of now is perfectly getting on to hold, but जैसे ही थोड़े थोड़े expansions होंगे, yes, we'll be obviously catering the market very soon and completing the whole setup. So
Nice. So you have a plan for basically manufacturing being handled by that Bangalore and Hyderabad teams, Right. and then further once you get that hardware support from them, and then you guys take care of all of the assembly part of it and doing the technical side of things, and then the supply chain is being taken care further. Very, very. So how many types of drone are you guys currently supporting, and what are your major SKUs that you are into? So that is what I mentioned, right? Yeah. Consumer, agriculture, and defense is the Okay. whole. All Yeah, three yeah. you are focusing. Okay. Yeah, all three we are focusing on. Wherein मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ. Basically यहाँ पे ऐसा है कि consumer से हमारा जो revenue है वो generate होता है, ठीक है? And agriculture is basically B2B distribution. And जो defense है, it is completely on B2G segment, wherein we provide to government. जहाँ पे one of the drones has been obviously in trials as of now. और लाइक बेसिकली ऐसा है कि जहाँ पे आपको ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालना पड़ता है डिफेंस में विथ लेस क्वांटिटी, बट आप वही कंज्यूमर पे देखोगे सो इट इज कंप्लीटली ऑफ लार्ज वॉल्यूम. और टेक तो अगर बेसिक भी रहेगा देन यू कैन जस्ट स्केल इट अप, बट एग्री में इज डिफरेंट. सो तीनों पार्ट्स जो है दे हैव देयर ओन सेगमेंटेशन and they have their own analysis when it comes to the tech point of view. तो हाँ, तो ये लाइक हम लोग ये तीनों मेजर सेगमेंट जहाँ से एक से रेवेन्यू निकल रहा है, दूसरे में ऑब्वियसली टेक इनोवेट कर रहा है जो R&D में पैसा जा रहा है, और लास्टली जो एग्रीकल्चर ड्रोन है इज बेसिकली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. तो ऐसे ही पैसे की भी फ्लो हो रही So है. you have figured it out, all the three segments of Right. like how to handle everything. Yeah, it's crazy, right? How you guys are dealing with in such an early age, right? And with such a good expertise. So yeah, it's really good and commendable what all you are doing. So just wanted to further deep dive, right? What everyone wants to hear about your Shark Tank story, obviously. But before that, right? So have you guys also applied for funding in other VCs for other VCs, or reached out early before Shark Tank, or Shark Tank was the first funding round that you guys raised? Mm-hmm. So basically, we have raised our pre-seed round from D Labs at ISB, which is the Indian School of Business at Hyderabad itself, and we have also received grants from Nidhi Payas using our third party VIT Vellore, and obviously we have raised our seed round from SharkTank, and we are now getting on with different terms as well. With our further investment plans. So yeah. Would you like to elaborate a little bit on the Shark Tank? How did you guys apply for it, and how did you get into that? Right. Yeah. So Shark Tank में it started off in March, and form March में आया, and then like we were not that much involved कि यार शार्क टैंक है. इट वाज लाइक कि माइंड फ्रेम में था हाँ कि शार्क टैंक है, हम लोग को अप्लाई करना ही है नो मैटर व्हाट हैपन, क्योंकि वी यूज्ड टू लाइक व्हेनेवर वी वर इन कोविड, और जब भी हम लोग टीवी देखते थे तो बेसिकली जब शार्क टैंक इंडिया पहली बार आया था वी यूज्ड टू वॉच लाइक एवरी एपिसोड, एंड देन अगेन रात में वी यूज्ड टू डिस्कस कि यार ऐसे हो रहा है, एंड अबाउट द कंपनी की how much they are also scaling up. और सब like शुरू से वो बहुत ज़्यादा नया था इंडियन मार्केट के लिए, तो ग्रैब करने में obviously it took time. तो we didn't had a mind frame कि यार शार्क टैंक में जाना है, but still it was कि हाँ अप्लाई तो करते हैं, let's see whatever happens. But जब अप्लाई किया and then we saw कि यार मतलब इन लोग ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे. It was like बेसिकली उन लोग ने रेवेन्यू मांगा था, फिर और कुछ मांगा था जो कि काफी बेसिक था लाइक इन शुरू के फॉर्म में, बट आफ्टर इवेंचुअली वी गॉट इनटू द प्रोसेस, तो फिर पता चला कि काफी अलग अलग वेराइटी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग वीसीज के पहले हम लोग उस टाइम वीसीज पे भी फोकस कर रहे थे, बट
VC से पहले वाले राउंड जो है, तो उसमें इतने क्वेश्चंस थे कि वी जस्ट गॉट कि यार कैसे, मतलब कैसे हम लोग ये कर लेंगे, बट स्टिल वी फिगर्ड आउट अ वे and then we answered each and every question. So around 10 Devant, years. I would like to stop you here and ask you, why did you think of VC's investment and not bootstrap it yourself and then grow? Because these are two ways of growing, right? But you chose the VC way. So what was your thinking back then, and क्यों चुना your path? And then you can get back to it. Okay, got it. तो जब पैसे नहीं होते ना तो VC के पास And that too, right? It's a hardware business, right? That they are into. So I think it makes sense हार्डवेयर एंड to सॉफ्टवेयर support the. बेसिकली, Hmm, हाँ बेसिकली ये इंटीग्रेशन वाला बिजनेस wherein definitely. yeah, wherein hardware and software combine and then they talk to each other. तो वो वाला बिजनेस है. तो हाँ, तो बेसिकली जब पैसे नहीं होते ना तो ऑब्वियसली खर्चे निकालने के पास दूसरे के पास जाना ही होता है. एंड wherein obviously your parents at that particular point जहाँ पे कुछ नहीं होता है aren't supportive. तो that is like in my case supportive वाली चीज जो है वो काफी इंटीग्रेट मैं नहीं कर Integral. सकता वो चीज. No, the अच्छा, अच्छा. part of integration between me and my passion and my parenting ये is completely different. मैं कभी वो नहीं कर सकता. So it was like one of the pathways जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिल रहे हो and then you find ways कि यार क्या क्या अलग अलग पाथ है जो कि मैं टैप इन कर सकता हूँ and accordingly as figure it out. तो एक वो सिनेरियो था. और Yeah. उस टाइम पे व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि जितने पैसे थे हम लोग के पास, पहले हम लोग ने वेबसाइट बनाई. ठीक है, तो जब वेबसाइट बनाई एंड उसके लिए पैसे लगे, और वो पैसे वहां से आए जहां से मैं ड्रोन्स बनाता था, इंडिविजुअल कस्टमर्स एज अ सेड अर्लियर. एंड मैं 11th-12th के बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाता था at that particular point, कोविड के टाइम पे. Wow, ठीक. nice. Cause वहां पे काफी ज्यादा like free ये मिल रहा होता था, तो I used to just go have 2-3 hours का lecture और accordingly उसके पैसे मिलते. So वहां से collect करते करते I just got in the group. तो ये scenario था. सही है यार, काफी This काफी is good interesting planning. यार, काफी मतलब good planning. नहीं, planning is one thing, Clarity मतलब also. how interested he is, right, in supporting his passion कि यार चलो physics पढ़ानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, but I need to get into this area, right? That level of passion is crazy. Right. So like सबकी मम्मी बहुत सपोर्टिव होती है हर जगह, इवन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हो फिर भी. बट वन ऑफ द की रीजंस इज कि भले मम्मी डांटती थी बट स्टिल शी यूज्ड टू कि यार ठीक है ये कर लो एटलीस्ट, चलो ये कर लो, ठीक है ट्राई कर लो एटलीस्ट. तो वन ऑफ द की रीजंस वाज कि ट्राई कर लो, ट्राई करने में कुछ जाता नहीं. That is how we got it. तो शार्क टैंक भी हम लोग सोचे भाई ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी जहां ले जाए. बट Yeah, वी हैड वन बिलीफ कि यार इफ वी आर like going into शार्क टैंक के थ्रू, तो एक पॉजिटिव चीज थी कि ड्रोन कंपनी शार्क टैंक में आई नहीं. तो वी हैड वन पॉजिटिव थॉट कि चलो अगर ड्रोन कंपनी नहीं आई, लेट्स सी कि बताते हैं कि यार इंडोर्स भी ड्रोन फ्लाई किया जाता है. सो दैट वाज वन थॉट. एंड देन फिर धीरे धीरे जैसे ही प्रोग्रेस हुआ, फॉर्म्स फिल करने के बाद फिर उन लोग ने ऐसे ही सेम ऑनलाइन इंटरव्यूज लिए. एंड देन वैसे ही वीडियोस हम लोग को भेजना पड़ा फिर अपने पिचिंग का. एंड ऑब्वियसली पूरा ये पर्सपेक्टिव चेंज हो गया टू सी द मार्केट where there is so much of glamour, I would say. जैसे ही वहां जाते हो तो you just see everyone working day and night, और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रात में at a go. तो वो एक बात था जो कि काफी ज्यादा ऐसे कभी देखा नहीं था, बट स्टिल आई गॉट टू सॉ. सो वहां पे वही सिनेरियो था.
एंड देन वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट था वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो आई वुडंट हैव एक्सपेक्टेड कि यार इतने लेवल का एक्सपर्टीज इन एवरी डिपार्टमेंट, इवन मेकअप से लेकर इवन पूरा प्लानिंग तक और पूरा एग्जीक्यूशन तक, हर एक डिपार्टमेंट में सभी लोग बहुत ज्यादा घिसवाया करते थे. तो एक वो बात भी काफी देखने मिला. So when you went to Shark Tank, did you have this thing कि हमें ये sharks ही चाहिए या फिर इन sharks से investment चाहिए इतना, और were you very clear about the terms and conditions, or you were like ठीक है कुछ भी पैसा मिल जाए यार, पैसा चाहिए हमको जहाँ से भी आए, or yeah, what was your approach towards your pitch? So basically we were obviously nervous कि जा रहे हैं ऐसे, और पांच शार्क्स, हम लोग को ये भी नहीं पता था शायद कि अश्नीर है कि नहीं उधर. ठीक है. Oh, interesting. Okay. हाँ, तो उस टाइम हम लोग को पता चला कि अगर अश्नीर नहीं होगा then how should we approach. अगर अश्नीर है तो obviously we need to just be straight to the point rather than एक Wow. pathway. Okay. So we thought of कि अगर अश्लील होगा then we can go with different pathway, और अगर नहीं है then we can just have some थोड़ा relief कि यार देख लेते. तो एक वो सिनेरियो था. और हाँ, हम लोग ने सारे शार्क्स के बारे में एनालिसिस की कि what all questions can come, because generally सारे अपने अपने शार्क, जो जितने भी शार्क्स थे उन लोग के अलग अलग एक्सपर्टीज थे. Yeah. And they have their own way of saying, जहाँ पे हर एक पार्ट उन लोग अपने वे से बताते थे rather than सारे common grounds. तो हाँ, we obviously had a discussion पूरा जिस दिन pitch होने वाला था, just शायद 24th या 25th of August शायद. तो उस दिन से पहले वाली जो दिन थी, it was completely based on कि यार brainstorming चल रहा है, हम लोग सोए नहीं थे. And it was around 5 o'clock in the morning. So ये पूरा brainstorming कर रहा है. I saw your vlog. I saw your vlog on the channel. Yeah, even I I think liked your Earth, vlog. Earth was vlogging, and he Right. mentioned that कल हमारी pitch है, आज रात को हम निकले. All those things. But काफी crazy Like भाई. seriously. और उस टाइम के बाद फिर और 7 बजे जाना था, और सबसे पहली pitch हम लोग की थी. So we were Oh like, wow. Okay. यही कर लेते हैं. काफी है यार, काफी सही. And it was completely one shot. So How long does it take to pitch? Because we have heard 2 that it hours. takes 1 hour, 2 2 hours. 2 hours, like continuous the pitch goes on. खड़े खड़े तुम वहीं रहते हो, खड़े रहते हो. खड़े वो जो हमें उसके 4-5 बाद मिनट से का दिखता है, हमें भाई 15 मिनट 20 मिनट मैक्स हमें एक यार ब्रांड का. 20 मिनट इज लाइक बहुत ज्यादा. 20 मिनट इज हाँ, 10-15 मिनट में अगर जो होता है तो वो 2 घंटे का, मतलब द क्वेश्चंस दैट दे आस्क Yeah. यू is way more than what we used Very to get true. on TV. Very true. Oh, okay. And Yeah, nobody knows that. our pitch was very clean. Like शुरू से Okay. लेकर अंत तक हाँ. कोई ये नहीं, फंबल कोई- नहीं या कुछ नहीं. कोई- हाँ, हाँ. right. It was like clean, जहाँ पे और शायद उन लोग को भी वैसे ही दिखाना हो, शायद पोर्ट्रे करना हो. भले we were portrayed as kids, so That's what I was wanted to get to as well, maybe later. But in these 2 hours, what is the approach that you have seen that VCs or angel investors in this case look at while evaluating a company? And तुमने सारे, did you think that you had prepared all the questions that might be thrown your way? How was the experience? Did you look at each other and like shit, ये तो हमने prepare नहीं किया था, कैसे answer करें इसको? Just walk me through the 2 hour experience. Yeah. Oh, Oh. yeah. no where वहाँ वो ऑफिस से ये ऑफिस में लोग फ्लाई कर रहे हैं. Wow. Hi guys. It's okay. Let it be. This is good content. He's letting the drone out. Bye. Bye-bye. Crazy, yeah. Just Maybe I think this is the time we should visit VIT. We are planning. Yeah, we are were planning it to along. visit VIT. Yeah. VIT. Definitely will make a This visit is- there. ये मुझे Yeah. आवाज आ रही थी and I just
figured it out कि यार Maybe it इसको is drone waiting at the बोलते door हैं. for you. He's like he was waiting over like वो ड्रोन जो था ना वो जस्ट डोर के सामने ऐसे होवर कर रहा है. I was like भाई रुक जा यार. देख ले क्या चल रहा है. Yeah, back to स्टार्ट. क्या था क्वेश्चन, क्या था अपना? Yeah, तो यार 2 hours का 2 pitch साल है. दो What all हाँ the 2 आवर questions? का जस्ट. हाँ अच्छा 2 hour का ब्रेक. Overview, kind of an overview if you can, मतलब कि क्या क्या main questions रहते हैं, and you might know, right, what are the intentions of the VCs Right. to make them invest in a startup? What really excites them to invest? Right. So basically अगर ठीक है चलो मैं आप लोग से ही चालू करूँ कि अगर आप लोग को ऐसा है कि आप लोग को यार 5,000 डालने हैं अभी किसी स्टार्टअप में, ठीक है. तो आप मेरे स्टार्टअप में डाल रहे हो 5,000, ठीक है. आपको लाइक आपके 5,000 रुपए जा रहे हैं, ठीक है. तो अगर 5,000 जेब से जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है. बट वही है कि अगर कोई अच्छे फर्म में डाल रहे हो पैसे तो आपको पता है कि यार पैसे डबल होने हैं, ठीक है. अभी आप देखोगे उसमें इवन इफ यू वुड सी देयर कि यार सबसे पहला इंप्रेशन क्या आता है, थॉट क्या आता है कि यार उसका कौन चला रहा है वो कंपनी, राइट. जो आप 5,000 डालोगे यार कौन चला रहा है, पहले तो मेरे को उसके बारे में जानना है, राइट. फर्स्टली इज द पीपल, देन कम्स कि यार वो ठीक है, चलो वो ठीक है. मुझे ये बताओ कि यार उसने क्या किया है, लाइक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब उस हिसाब से, राइट. क्योंकि you don't think any particular about apart from revenue generation. सबसे पहला थॉट आता है यार पैसे कितने कमाए या पैसे कितने बर्न किए, राइट. तो क्या स्टेटस क्या है कंपनी की एज ऑफ नाउ, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है. इट इज लाइक वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे बेसिक क्वेरीज होती है जहाँ पे वो फुलफिल करना होता है. द आइडिया ऑफ एग्जीक्यूशन कि यार वो उसने क्या ऐसा कर लिया अपने लाइफ में जो कि आगे जाके ये कंपनी को रन कर लेगा, ठीक है. और उससे पैसे डबल हो जाएंगे, राइट. तो अब ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि इट कैन रेप्लिकेट इनटू थिंग्स व्हिच वी थिंक कि यार जो कि कॉमन नहीं है. और कभी कभी वही हो जाती है कि बात कुछ और निकल के आती है बट सामने कुछ और रहता है. सो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट ऑन योर पर्सपेक्टिव कि अगर आप पैसे डाल रहे हो तो आप हर लेआउट और हर एक एंगल से देख रहे हो कि नहीं वो कंपनी, और तब पैसे डाल रहे हो, राइट. और लास्टली ये कि आप उसके पैसे कैसे लौटाओगे, विच इज कॉल्ड एन एग्जिट. तो किसी भी इन्वेस्टर कोई भी डालता है किसी भी कंपनी में पैसे डाल रहा हो, तो बेसिकली वन ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड एग्जिट, जो कि बहुत क्लियरली मेंशन करना होता है अपने डेक में या पिच डेक में, जहाँ पे से कि यार आप अभी डाल रहे हो और आपके 5 साल बाद ट्रिपल या 4 गुना भी हो सकते हैं, ठीक है. सो वो कैसे होंगे उसका आंसर देना इज वेरी ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड विजन ऑफ योर कंपनी की नेक्स्ट 3 to 4 years में आपका क्या प्लान है and how will you be executing those plans and obviously expanding your business through that. So yes, these are all the key elements and aspects of each and every business which you would be referring into और जिसमें पैसे आप डाल, तो ये सब देखना पड़ता है. काफी सही. So I think you had had your bases covered जाने से पहले. I think you went through all the different flows and क्या क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं. बट ऐसे कोई क्वेश्चंस थे which you're not ready for and thought कि क्या करें, इसका क्या आंसर करें हम. राइट. वो एक्चुअली अभी तो इट इज फाइन बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब अगस्त में वो शूट हुई थी, तो जब अगस्त में शूट हुई थी देन उसका जो मतलब ऐसे जो परसेप्शन रहता है कि 6 महीने पहले हम लोग कुछ और बोल रहे थे और अब इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो ऑब्वियसली टाइम प्लेज अ पार्ट, बट काफी सारे थे ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे जहाँ पे हम लोग अटके थे
बट अटकने के बाद भी द आंसर्स वर क्वाइट, जो भी लाइक जो भी आंसर्स दे रहे थे वर अप टू द मार्क फॉर आवर विजन टू लाइक टू अचीव. तो वहां पे हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो पर्टिकुलर चीज को या एक पर्टिकुलर पीरियड को, तो वो वाज क्लियर. बट आई फेल्ट समटाइम्स कि आंसर वाजंट टू द पॉइंट. बट अभी आप वो चीज पूछोगे देन वो Obviously, I पक्का. mean, now you have much more experience, many months of experience after that. And obviously, very really great mentors. You got 4 sharks on board, if I'm not wrong, for your ask. I mean, that's pretty crazy. Again, congratulations. So what is the process like after Shark Tank? Once the shoot was over, let's start from there. Mm-hmm. So after Shark Tank, basically जैसे शूट खत्म हो गया था तो इट वाज कंप्लीटली ऑफ पीरियड जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है एंड यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग फोकसिंग ऑन योर वर्क और कोई मतलब नहीं कि क्या शार्क बात टैंक कर रहा है भाई, नहीं मतलब यार, मतलब उसकी बात नहीं है. तुझे फंडिंग मिल गई है, तुझे मेंटर्स मिले हैं, कुछ तो चेंज आएगा ना इन द वे यू ऑपरेट. सो या फिर टाइम लगता है ड्यू डिलिजेंस करने के लिए 2-3 महीने, फिर कुछ होता है. सो वो प्रोसेस क्या नहीं नहीं ऐसा? मुझे लगा कि नहीं आपने पूछा वो कि यार फेम का वो चलेगा, वो तब आएगा नहीं जब नहीं नहीं एयर हो गया. शार्क हम्म. टैंक के शूट के बाद क्या हुआ. हाँ हाँ, उसी की बात अच्छा कर वो रहा हूँ मैं. एग्जैक्ट मे अच्छा, तो बी एग्जैक्ट वो बता, उसी दिन एग्जैक्ट. का बता रहा है क्या तू? हाँ उस हाँ दिन क्या हुआ? हाँ हाँ वो हाँ, बोल 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 बोल. अरे कंटिन्यू. हाँ, वहां से लेके जाओ, स्टार्टिंग से लेके जाओ. या तो उस टाइम इट वाज कंप्लीटली ऑब्वियस कि हम लोग को अपने वर्क एथिक्स पे फोकस करना था रादर देन कंप्लीटली थिंकिंग अबाउट शार्क टैंक. और एक टाइम कंप्लीटली स्विच ऑफ हो गया था कि यार शार्क टैंक करके भी हम लोग ने ऑडिशन दिया था बिकॉज आफ्टर 2-3 months तो ऐसे भले हम लोग के साथ इंटरेक्शंस हो रहे थे जो भी शार्क्स ने इन्वेस्ट किया था. लाइक वी हैड रेगुलर इंटरेक्शंस विद अमित जैन as well as अमन गुप्ता as well. और पीयूष बंसल ने भी काफी सारे चीजें बताई जहाँ पे हम लोग लाइक बेसिकली इट वाज कंप्लीटली जामिंग सेशन हर एक पीरियड में. तो इवेंचुअली फिर हम लोग को लगने लगा कि नहीं दिस इज सॉर्ट ऑफ थोड़ा बिग प्लेटफॉर्म पे ऐसे गए. और फिर सेम चीज फिर लाइक पैसे की बात अगर आती है तो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस which is to be done by the lawyers of that particular Shark Tank जो Shark Tank India Private Limited है वो करती है. एंड और जो हम लोग के लॉयर्स हैं वो बैठ के दे हैव द एग्रीमेंट कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस जो कि होता है एंड इट इज कंप्लीटली इन द प्रोसेस वेर इन यू फिगर इट आउट कि यार इसको लाइक जितने भी हम लोग ने चीजें टीवी पे बताई हैं दैट इज कंप्लीटली ट्रू. एंड जो इवेंट्स हम लोग ने बताए हैं जो इवेंट्स जो आगे के प्रोजेक्शंस जो बताए हैं दैट इज कंप्लीटली लेड आउट परफेक्टली इन अ परफेक्ट वे. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. एंड ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी आपने वैल्यूज या कुछ भी आपने नंबर्स बताए हैं दैट इज ट्रूली करेक्ट एंड अकॉर्डिंगली दे चेक इट आउट. तो वन ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडिट वेर इन जहाँ पे हर एक पार्ट आपका चेक किया जाता है, अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया जाता है. सो यू गेट अ कंप्लीट विग्रस प्रोसेस उसमें. तो वैसे ही होता है एंड दिस वुड टेक ऑब्वियसली थोड़े लेटर ऑन स्टेजेस पे. बट आफ्टर टेलीकास्ट तो फिर आप लोग को पता ही है हाउ डिड इट गो. But then other VCs might have reached you, right, to fund your startup after Shark Tank. राइट काफी सारे. Yeah, I know. वो अभी रिवील नहीं कर सकते हैं. अभी राउंड रेस हो रहा है. नहीं बट ऑब्वियसली एक 2 महीने में इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग जो कि आगे आप लोगों को पता चलेगा. एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. You guys are the inspiration, man. मतलब in such an early age, you just followed your passion and like just went crazy. Ah, good work. Pretty great, man. Pretty So great. maybe I let's mean, come back again, right, onto the drone business. So what's the main basically
drone industry for the future in India specifically, right? Because you are targeting this country, maybe you will go global, right? Right. What is it looking like in India currently? As of now, जो government है, they are also promoting drone as a service-based model and even as a manufacturing model. So by 2030, they have government has planned out to become a global drone hub uh, in the world. Wow. As in manufacture, when it comes to manufacturing parts or electronics, semiconductors are going into a great market, and that would be obviously covered by 2026, in which now Deloitte का भी report आया था, जहाँ पे they have mentioned कि by 2026 we will be obviously covering the semiconductors wala part. But apart from that, coming on to the defense grade drones and the agricultural drones as well, they have a huge market. Like it is completely in the thousands of crores, wherein we also can't imagine the numbers which will be laying out forward in future. But obviously, काफी high scale production and काफी ज़्यादा काफी huge market है basically. एक अगर है एक word just can't imagine अभी कि कितना यूज होने वाला है फॉर द इंडिया, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी थी नहीं कभी ड्रोन की. इट वाज ऑब्वियसली अमंग यूरोपियंस एंड चाइनीज पीपल, बट राइट नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू गेट ऑन विद द ग्रुप. And they have also like put ban and all, right, in export of these drones. So I Very think that will very- also promote it. very Yeah, so can you talk a bit more about the ban? Because I think you want to become the DJI of India, if I want to put it that way. And currently they can't sell in the Indian market, right? Directly, DJI. Right. So what most people do is ask someone from the US if they're coming, they can bring Illegal it from export, there, basically. or just Yeah. export it through different routes. That's how it happens if people in India want drones. So Right. at some point in time, these restrictions might be lifted off when government feels that हाँ ठीक है इंडिया में production हो रहा है अभी Indian drones का भी, these drones can give competition to our competitors internationally. At that point in time, they might stop the restrictions and let the global players enter the market. How do you think Indian companies like such as yours, Indian drone companies, would be approaching such a situation? Very distant, hypothetical, but I would love to hear your answer. Basically, if you could just frame it in a sentence. In a sentence, if DJI Yeah. enters Indian market tomorrow, Right. with restrictions lifted, would Indian companies be able to give Indian companies such as InsideFPV be able to give a Is competition our to tech them? is our tech and hardware enough matured to support the need? Yes, I do feel there's a huge demand as of now in the industry, but जहाँ पे if you see supply and demand वाला part, so demand is quite high, but supply is quite less as of now, according to the market which we are catering. But there are like various of instances when you see companies growing right from scratch. ठीक है? अब DJI के पास they just can't. अगर आप अभी देख लो, अब आप अभी ड्रोन लोगे DJI का, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आती है, राइट, तो आप ना वीडियो कॉल कर सकते हो, ना उन लोगों को कॉल कर सकते हो, सिर्फ मेल करोगे जो कि 6 महीने बाद रिप्लाई आएगा. ठीक है, there's no service model wherein they can provide customer Any help. service or crash warranties or कुछ. अगर even if DJI comes into the market अभी के टाइम पे, तो जो कस्टमर्स हम लोग ने बनाया है, जो कस्टमर बेस हम लोग ने बनाया है राइट फ्रॉम स्क्रैच, एंड डीलिंग विद कस्टमर्स इन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है बेसिकली, एंड वर्ड ऑफ माउथ प्ले है. तो these all things come in a part, and obviously ये काफी शेव ऑफ कर देंगे to the foreign companies which would be coming here. And right now we are also seeing this huge thing coming up कि
लाइक मेड इन इंडिया चीज को लोग काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं rather than foreign development, and that is why we have inculcated our whole aspect of our technology, जो कि FPV technology है, into our common backgrounds, wherein we use it in agri, defense and consumer base. तो हाँ, obviously our technology is much more compatible, और आगे जाके these subsystems, these smaller subsystems और segments जो हैं वो काफी सारे changes आएंगे, and accordingly will develop the technology as well. So yeah. Would just like to know a little bit more about Yes. your software. So, are you guys using any third-party softwares, or you built onto top of those third-party softwares, or like is everything from the scratch that you guys are into for maybe different areas that you are catering, agriculture, military? I know, right? It requires customization and innovations for which you might be already revamping your software, but just Right. wanted to know how did you guys started it? So basically, like obviously we if I want to talk about my whole thing scenario, so basically we design and we give our designs, our drone frame designs, our electronic design to our contract manufacturers. They like outsource it, and we assemble it over here and integrate to our own software to Okay. locate your drone easily and get easy access to flight data as well. So also we have filed patents for the same. So when it comes Wow. to innovation, right? So obviously it is key to building any intellectual property. So when it comes to indigenization, like making things to control by us, or we can control anywhere from anywhere and everywhere. So in that particular sense, we have our defense grade drone, wherein we also have our own manufacturing unit, wherein we do provide the whole scenario into a compact space, and we give technology the priority as much. So when it comes to generation of getting of things hold, or catering a huge platform, so yes, and it obviously requires acceleration of innovation. So it does build inside FPV a unicorn in coming years as well. So obviously right Unicorn. now, Yeah. yeah, Definitely so hoping for it, man. Yeah. so Yeah, obviously def- we are sole believer of technology coming from elsewhere, and it is enigmatic to understand hardware in India as of now, क्योंकि हम लोग ज्यादा सर्विस वाले लोग हैं, और अगेन विल बी ऑब्वियसली आईपी भी उसका जो कि हार्डवेयर जो बनाते हैं बाहर से, जो फॉरेन कंट्रीज बनाती है, तो उसका आईपी भी जो है ना वो कहीं और रजिस्टर होता है. So Correct. right now we are building proprietary tech and registering IP here itself rather than just copy printing. Really good base you're making for yourself, because आगे जाके काफी, I think this will bear fruits for Right, you. right. And you can also even sell your tech individually apart from the drone as one unit going forward, because Very खुद का टेक बनाना इतना इजी नहीं होता है जो तुम कर that's रहे why हो like अपने I side was पे. like little bit interested ki how did they went into this tech thing also, because as you said, right, you are handling all the tech part of it. You might Right. not be good at some things, right? So how did you manage to get those people who are good at basically handling just the software or assembly part of it, just one people who are handling the electronics part of it? So there are multiple areas, right? So it might be difficult for you. Very So true. yeah. हाँ, बाहर से it feels काफी difficult, है ना, बहुत, क्योंकि I have seen many of the people जहाँ पे लोगों को काफी difficulty face होती है, and it, like obviously as an insider मुझे पता है how it evolves through the process. तो basically आपको process पता होना चाहिए, like जैसे मान लो कि even if we are making a frame, ठीक है, एक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जस्ट वी आर मेकिंग अ फ्रेम जहाँ पे आपको लेयरिंग करना है, आपको पता है आपको प्रोसेस क्या है, ठीक है, यू नो वेयर. Obviously if you don't know,
then you obviously have to learn it. Yeah. और वो धीरे धीरे आ जाता है Over अगर the आपको time. right over the time, over the period of time. But the specific thing is कि आपको process पता होना चाहिए whether you like deeply know or not. ठीक है, तो आपको अगर process पता है तो accordingly people मिल जाते हैं. ठीक है, that is resources. तो अगर आपको उस हिसाब से resources मिल रहे हैं जिस हिसाब से आपको वो direction में लेके जाना है अपनी company, आपको पता है कि आपको कौन से direction में लेके जाना है, like you are feeling, और अगर आपको like दिमाग में आपके प्रोडक्ट बन गया है, राइट, सो ऑब्वियसली यू हैव लेयर्ड आउट द प्रोसेस, और लेयरिंग करने के बाद ही आपको इजीली पता चल जाएगा कि यार इसमें इतने लोग चाहिए, इसमें इतने लोग चाहिए, ये डोमेन से चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी जो AI/ML पे काम कर रहे हैं, दे आर बेसिकली ऑल्सो डिवाइडेड इन डिफरेंट रूट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स, जहाँ पे कोई कंप्लीटली एम्बेडेड पार्ट देख रहा है और कंप्लीटली डिजाइनिंग देख रहा है, कैड डिजाइनिंग देख रहा है, मॉडल्स देख रहा है, सो इट ऑब्वियसली हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट. बट वो प्रोसेस, वो पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए देयर आर चंक्स क्रिएटेड, और दोस चंक्स आर प्रोसेसेस, एंड दोस प्रोसेसेस आर जो भी जितने भी रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी करेक्टली प्लेस्ड. तो आप बिल्डिंग, लाइक इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट मेक्स अ ह्यूज कंपार्टमेंट, बट वो ब्लॉक्स जो है, that blocks are basically resources which you need to inculcate in right manner. तो हाँ, वो eventually time के साथ होता है, and also you need to keep learning as well. भले मेरी expertise कई सारे field में नहीं है, I'm just restricted to one, so it is very difficult to go ahead. So that is one of the very well put, very well put. Very I well think. put, yeah. Yeah. I think the level of clarity these guys have, Mank, is I think really next level. I can see why they're doing so well in their respective industry. But doing well in respective industry brings me to the next question, and I hope your answer to this question is no. Have you faced any challenges as young entrepreneurs when you started? You're right in your college, maybe last final year of college. So when you started out, did you face any challenges wherein people or customers might not have taken you seriously because of your age? But I really hope the answer is no. But what has your experience been like being young founders? तो अभी भी बहुत दिक्कतें आ रही है, ऐसे बच्चे समझ रहे हैं सब. तो but still obviously यार, क्योंकि that is our mentality, right? Yes. कि थोड़ी people should be aged, or people should be between 25 to 30 के ग्रुप में, जहाँ पे they have their vision to just execute it very quickly. They don't feel कि यार वो young entrepreneurs को it takes time, but eventually जो experience मिलता है, even if you fail or even if you achieve something in life, that is not at all important. Experience बहुत मैटर कर जाती है. So yeah, शुरू से we are completely online वाली चीज, ठीक है, ऑफलाइन में हम लोग गए नहीं. तो 2 साल जो बिताई थी हम लोग ने कोविड में, that was थोड़ा डिजास्टर था, because obviously things were flowing out in and around, जहाँ पे ऑनलाइन ही सिस्टम था, और हम लोग ने सिर्फ कॉल पे बात की थी, ठीक. अराउंड अभी भी इट इज लाइक just infinite भी नहीं, but even if I take a number like 2000 या 3000 around कर लिए होंगे हम लोग ने calls उस टाइम पे. और it was like सो भी रहे हो तो आप कॉल कर रहे हो, उठ भी रहे हो कॉल कर रहे हो, चल भी रहे हो तो everything on calls, everything on call, and it was completely. और जब आप लोग बेसिकली, अगर आप सेकेंड ईयर में हो मान लो, ठीक है, आपको मैंने एक रियल टाइम कस्टमर से बात करने के लिए बोल दिया, ठीक है, तो आपका जो एनालिसिस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब आपका अप्रोच ही अलग हो जाए. आप अभी कॉलेज में बेच रहे हो, वो भी बच्चे को बेच रहे हो, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे को बेच रहे हो, ठीक है, तो वो पर्सपेक्टिव और ये वाली पर्सपेक्टिव काफी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आप रियल टाइम कस्टमर और आप बच्चे को बेच रहे हो, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो कि अभी हमारी सेल्स टीम करती है. सो दे आर इन फर्स्ट सेकेंड ईयर एंड दे आर लाइक बहुत
क्रेजी सेल्समैन जैसे काम कर रहा है। इट इज लाइक और जब रियल टाइम कस्टमर से बात करते हैं ना, देन ऑब्वियसली यू फील इट, और वहां से ही आपका एक्सपीरियंस लेवल चालू होता है। इवन दैट जो सामने वाला है कस्टमर, दे ऑल्सो डोंट नो कि भाई कौन बात कर रहा है, राइट। और जैसे हम लोग बात करते थे, इट वाज लाइक थोड़े एजेड लगते थे हम लोग कि भाई थोड़ा तो एजेड हो गए। एंड मोस्टली टॉकिंग Nice. अबाउट वेंडर्स, तो जितने भी हम लोग ने उस टाइम इंडिया में वेंडर्स बनाए थे, ठीक है, 2 साल में हम लोग ने जितना भी वेंडर्स बनाए, सब लोग को लग रहा था वी वर अराउंड 30 to 35 के टाइम, ठीक है। Wow, okay. और फिर जब ऐसे हम लोग मिठाई लाइक स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे आफ्टर लॉकडाउन एंडेड, एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ कि थोड़ा चलो चल के मिलते हैं, जिसके साथ 2 साल बिजनेस किया है उसके साथ। Finally And they मिल were लेते like, and they were like, भाई क्या करके आया तू? They were like, हैं. they just thought of something different and they got to know. और उन लोग भी अराउंड 40-45 के थे, इसीलिए उन लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ यही एज। सो देयर वर चैलेंजेस जहाँ पे कभी कभी हो जाता था कि जहाँ पे एक दो कस्टमर को समझ आ जाता था कि दे आर जस्ट मेकिंग आउट यहाँ पे कि अगर इन लोग को ये वे नहीं आ रहा है तो दे आर टेकिंग डिफरेंट रूट, but still we were able to manage the complete pathway जो भी That's हम लोग ने crazy, yeah. customer experience बनाया। But good thing they didn't ask you अपने पापा को क्यों लेके नहीं आए. But yeah. अरे यार निशान कुछ भी। ठीक है. But yeah, I think good approach, and I think COVID helped you because online, as you said, interactions खाली तुम्हारे voices के होते थे, and you built that network. Great, man. Nice. What else? What else? Mike, anything? Yep. So what is next for Inside FPV? How you guys basically, yeah, I know, right? You might be having a lot of VCs onboarded already, and you might be planning for your पता नहीं यार, unicorn सब सीक्रेट level बाहर thing. आ रहे हैं, मतलब मैंने कुछ Unicorn, कर ही नहीं unicorn किया। बनने वाले हैं, unicorn बनने वाले हैं. But what's Right. Right. yeah. So So are you basically, planning to scale up your team, or yeah, what's next? Or maybe you can share your vision. yeah. So as of now, अगर मैं डिटेल में बात करूँ, so it is basically different in different segments, like different pathways in different segments. Basically, I would like to talk about more in defense rather than in consumer or agri, जहाँ Sure. पे हम लोग का जो scenario है is about scaling up our tech to a next level, wherein अगर आप अभी देखोगे the existing drone bodies जो भी हैं who have applied for like defense grade drone, so firstly like they don't support any AI real time computing system, ठीक है। और जो दूसरी बात है कि ट्रैक एंड रिकॉग्निशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, लाइक ये सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम्स को हम लोग को सॉल्व करना है। सो बेसिकली डिफेंस में जो प्रॉब्लम्स हैं एज ऑफ नाउ द एग्जिस्टिंग एरियल बॉडीज हैव, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। Even if I talk about the risk involved in getting subsystems from neighboring countries, और उस पे spying के risks काफी ज्यादा होने के chances हैं, and it can get like easily tampered as well. So we are much more concerned about defense, जहाँ पे जवान्स को बिन फालतू का उन लोग को आर्म्स और एम्यूनिशन लेके जाना पड़ता है फील्ड में, when it comes to जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी भी, बट देयर इज हाई रिस्क कि यार वो लाइक जवान को अपनी जान देने की वो चीज हो जाती है ना, तो हम लोग को वो चीज रिड्यूस कर रही है rather than focusing on putting an extra load, मतलब maybe very just true, carry of the very true. So that is what we have thought of कि एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जहाँ पे वो जो रिस्क फैक्टर है वो हम लोग रिड्यूस कर सके, और जो लाइक जितने मार्टरडम्स हैं
अभी पहले से भी और आगे भी अगर ये प्रॉब्लम्स लाइक हम लोग को वो दिल से लगता है कि डिफेंस वाली चीज जो है शुड बी एट ग्रास रूट लेवल, इसीलिए हम लोग ने अभी वॉच टेक्नोलॉजी भी लाई है जहाँ पे ना जहाँ पे व्हाट दे कैन डू इज बेसिकली जब हम लोग के ड्रोन्स काफी लाइक इट इज अराउंड 10 to 15 kilometers पे होंगे, दे कैन स्टिल यूज देयर वॉच टू नेविगेट या एंड और एक और चीज है जहाँ पे हम लोग ने जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में जो कि जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको लोकलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहा है, बेसिकली सैट्स नहीं मिल रहा, राइट? तो हम लोग वो भी एरिया एक्सप्लोर किए एंड वी हैव बिल्ड दैट सिस्टम जो जीपीएस डिनाइड ऑटोनॉमी है वो भी हम लोग ने बनाया. And it is based on like drone on drone concept. So basically our drones will be used for surveillance, reconnaissance, patrolling, distraction, extraction and offensive and defensive tactics. Oh, wow. तो ये सिनेरियो है सारे, मतलब conclude अगर मैं करूँ तो defense is the major part which we will be floating into, and बस यही है. And That's really great. So you have like someone who is like helping you to understand their challenges, someone from defense or INA or right. yeah. So we have even collaborated with आप लोग ने उरी मूवी देखी होगी, राइट? तो उरी मूवी में जो डिफेंस बर्ड रहता है, लाइक जो ड्रोन बर्ड है, आप लोगों ने ड्रोन बर्ड देखा होगा वहां पे जहाँ पे वो उड़ के इट गोज इनटू एनिमी टेरिटरी एंड देन इट प्रोसेसेस द इमेज एंड देन इट रिवर्ट बैक. तो वो ड्रोन बर्ड कंपनी के साथ हम लोग ने कोलैबोरेशन किया है. Oh wow. So Crazy. wow. Wow. Next तो level, ये man. मैंने I बता thought दिया. like that was a VFX, but that's a real drone bird seems No, like. no, that is real drone. Okay. Wow. तो उसके साथ कोलैबोरेट किया है एंड वी हैव ऑन बोर्ड कर्नल्स एज वेल, जो कि हैं काफी सारे हैं जो ऑन बोर्ड हैं एंड दे आर ऑब्वियसली अ ह्यूज पार्ट एंड काफी अच्छी मेंटोरशिप देते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस. और हम लोग ग्राउंड लेवल से, बिकॉज इट इज हार्ट टू हार्ट, ये फीलिंग हार्ट टू हार्ट है जहाँ पे आपको कुछ करना है इस अपने कंट्री के लिए, विच इज थ्रू ड्रोन्स. और अगर हम लोग पहुंच सकते हैं तो ड्रोन से ही पहुंच सकते हैं. और आई डोंट थिंक एनी अदर थिंग विच वी कैन ऑब्वियसली लीड इनटू द पाथवे जहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग देखें डिफेंस सेक्टर में इज वन ऑफ द की एसेंशियल्स. तो हाँ यही है. बढ़िया यार. Perfect. But I hope like after the podcast, just confirm we can put these parts about defense in the podcast or not. Or if you're sure about it, then it's okay. Yeah, you can go ahead. That is not About your But this collaboration with that drone company and all those things, okay, right? It's not हाँ an हाँ issue. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग ने लिंक्डइन पे भी डाला हुआ है. सो दैट इज That should not be नॉट an issue. Okay. overall यार मचा दिया यार इस इंडस्ट्री में, मतलब सही है. काफी crazy, Great काफी work. crazy. काफी क्रेजी. नहीं बट अच्छा खासा तुमने वो मार्केट कैप्चर कितना तुम्हारा कंज्यूमर ड्रोन्स में? अभी काफी वो मैं रिवील नहीं कर सकता बट काफी हाई परसेंटेज है जहाँ पे अराउंड 40% ऑफ रिटेंशन रेट है हमारा. और हाँ, और अराउंड 100 to 200 ड्रोन्स हम लोग अभी मंथली केटर करते हैं. सही है. मैं तो ऑर्डर करने वाला हूँ भाई तुम्हारा. मैं भी मतलब I have seen their Inside YouTube वाला है. video where they are selling it for like 2-3,000 only. Yeah, I'll Yeah, definitely ठीक order है it. क्या यार है. and even हम लोग made in India drone launch करने वाला है in 1 or 2 months and that Wow. would be completely from scratch. Talking about that, like उसके मोटर्स से लेकर बॉडी डिजाइन तक सब कुछ, इवन कंट्रोलर जो जितने भी सब सिस्टम्स लगते हैं ड्रोन पे सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच. और वो मेड इन इंडिया आजाद करके हम लोग वी हैव आवर ओन प्लान्स टू गेट फॉरवर्ड दैट प्रोडक्ट. बहुत तो अभी बढ़िया. आएगा. हाँ बढ़िया ब्रो. काफी अच्छी कर रहा है. एंड द कैमरा दैट यू हैव इन योर होम ड्रोन्स, is that something which can be changed for the quality of videos that we'd like to shoot, say, using the drone?
So basically, अगर आप 2800 वाला लोगे, so obviously you cannot change the camera. But अगर आप थोड़े high like 25-30K वाले range के drones लोगे, so that would have आप उस पे अलग से कैमरा अटैच भी कर सकते हो बेसिकली, बट यू कैन नॉट चेंज इट डिपेंडिंग ऑन आर कस्टमाइजेशन. अगर आप अपने एंड से बताओगे कि आपको ये कैमरा नहीं चाहिए, यू वांट द 4K रेजोल्यूशन, तो हम लोग वो भी लगा के देंगे. सो इट इज प्योरली फ्लेक्सिबल, जहाँ पे आप अटैच भी कर सकते हो और हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. Nice. So we can have customized drones also made. So you still have that business that you started going on the side. Yeah, that is that That is is just a floatable. But हाँ, हम लोग ने अपने रेंज के ड्रोन्स ला दिए, लॉन्च कर दिए थे एक साल पहले, बिकॉज आफ्टर मार्केट रिसर्च ही हम लोग ने काफी ज्यादा फोकस किया था कि कस्टमाइज पे नहीं चाहेंगे. विल ऑब्वियसली स्टिक टू, बट कभी कभी आता है कि एक दो कस्टमर्स ऐसे निकल ही जाते हैं wherein they want to customize no matter what, वरना it is like take it or leave it. So that's good, man. We just have 2 minutes till this recording gets over. So end कर देता हूँ, and then कुछ question है तो I'll just reach out to you. So thank you so much. VIT जाना है बस अब तुम्हें. सही में भाई, एक बार जाना तो है यार, मतलब काफी बढ़िया था. VIT में तो एकदम ऐसा अच्छा, आप हल्का मच लोग गया बताओ, होगा. चलो आप लोग बताओ कि हाँ. आप लोग के टाइम पे हाँ. कौन पैसे देता था, लाइक किसके लिए? नहीं कोई नहीं देता था. आप लोग अगर कनाडा और यूएस भी जाओगे ना, तो आप लोग वहां पे कुछ ना कुछ करके आप लोग को पैसा मिल रहे होंगे, राइट? बट हम लोग भी ये चाहते थे ना यार कि अपने टाइम पे कि यार कोई ऐसे पैसे दे, कुछ काम करने के पैसे दे. नहीं आता, नहीं मिलता यार. VIT में एक्सपोजर के अलावा तो और कुछ नहीं मिल रहा ऑनेस्टली. एक्सपोजर नेटवर्क, मतलब वो तो भर के मिलेगा तुझे. Right. But I think you've made the best of the opportunity available. Best out of it. I think that's नहीं great work यार, keep doing it. And मतलब definitely, dude. I mean, if anytime you come to Bangalore, feel free to ping and we can hang out. हाँ, sure. And if you go to Gurgaon, ping my uncle. He's I'm in Delhi. in Delhi. So he actually going to IIT Delhi. You had mentioned, right? कि उसका I saw कि you are the official. You are going to IIT Delhi. Drone partners of the fest of IIT Delhi. Right. तो अभी काफी सारे IITs लाइंड अप है ये वाली बात. और काफी सारे NITs भी लाइंड अप है. तो हम्म. स्पॉन्सरशिप्स भी दे रहे हैं, कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं. तो इवेंचुअली Perfect. बेसिकली पोर्टफोलियो बना रहे हैं.